Assalamu alaikum. Welcome once again you all in यूनानी स्कॉलर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सीरीज़। तो इस सीरीज़ के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया एंड वायरल इंसेफेलाइटिस। ARI acute respiratory infection. Infection of upper and lower respiratory tract is known as acute respiratory infection. Major causes of morbidity and mortality in children under 5 years of age. National ARI control program started under Child Survival and Safe Motherhood initiatives. It focused on early detection, rational antibiotic use and referral. Objectives of ARI control: to reduce child mortality, early diagnosis, appropriate treatment, community awareness and strengthen referral system. These are objectives of ARI system. Signs of acute respiratory infection. These are some common signs of acute respiratory infection: cough, fever, running nose, sore throat, fast breathing, chest indrawing. IMNCI, Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness. It is launched in India in 2003. It combines management of acute respiratory infection, diarrhea, malnutrition, measles and neonatal illnesses. Pneumonia. Pneumonia is the leading infectious cause of death in children. Its common pathogen is Streptococcus pneumoniae and H. influenzae. Classification of pneumonia: no pneumonia, pneumonia with fast breathing and severe pneumonia. In severe pneumonia there is chest indrawing and it is very dangerous sign. Management of pneumonia: oral antibiotics, oxygen therapy, referral of severe cases should be done and nutritional support of children. सांस इनिशिएटिव. सांस इनिशिएटिव क्या है? इट इज़ सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2019. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सांस: टू रिड्यूस चाइल्डहुड निमोनिया डेथ एंड इंक्रीज अवेयरनेस अमंग पीपल एंड promote early care seeking behavior. Key component of SANS: community awareness, training of health workers, referral linkage and improved case management. These are key components. Prevention of pneumonia: exclusive breastfeeding, proper nutrition, immunization against pneumonia, hand hygiene and reduce indoor air pollution. Pneumococcal conjugate vaccine (PCV). This vaccine introduced under Universal Immunization Program. It protects against pneumococcal pneumonia and meningitis. Viral encephalitis: inflammation of brain caused by viral infection. It is major public health problem in some regions. AES, acute encephalitis syndrome, acute onset fever with altered mental status and or seizures. JE, Japanese encephalitis. It is most common viral encephalitis in India. It is mosquito-borne disease caused by JE virus. National Program for Prevention and Control of AES or JE. There is continuous surveillance and vaccination against this disease, vector control, case management and awareness among people. Objectives of AES or JE program: to reduce mortality, prevent outbreak, strengthen surveillance and improve case management. JE vaccination strategy: there is mass vaccination in endemic districts and routine immunization in high risk areas. Vector control measure: mosquito control, larva source reduction, fogging and use of bed nets. Surveillance under IDSP:
इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ट्रैक्स AES और JEE आउटब्रेक एंड इट्स ट्रेंड। इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फैक्ट्स क्या हो सकते हैं इसमें, तो ये डेट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। IMNCI लॉन्च हुआ है 2003 में, UIP 1985 में, सांस 2019, ITSP 2004, JE क्या है, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है ये। वन लाइनर रिवीजन, ARI इज़ अ मेजर कॉज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी। सांस टारगेट्स निमोनिया, सांस पूछ सकते हैं ये किस बीमारी से इसका ताल्लुक है, तो ये टारगेट करता है निमोनिया को ये प्रोग्राम। AES इंक्लूड्स फीवर विद ऑल्टर्ड सेंसोरियम। JE वैक्सीन यूज्ड इन एंडेमिक एरियाज। समरी क्या है इसकी, इट इज़ कंट्रोल प्रोग्राम फोकस ऑन प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन, सर्विलांस, अर्ली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।